सिर्फ 40% कवर कर सकते हो, 60% अभी भी अलाउ नहीं है जाना। Mehranghar, the fort of Jodhpur, crowns a rocky hill that rises मैं पहुंच गया हूँ जसवंत थाड़ा। This white marbled architecture is a memorial site. इस ब्यूटीफुल लेक के पास खड़े होके What's up everyone, it's your boy Abhi, the snow cruiser, back with new video darling. So it's a beautiful morning in बनार भी जोधपुर में ही है। So अभी मैं होटल में हूँ, ब्रेकफास्ट कर लिया, चेंज करना बस, चेंज करके फिर यहाँ से निकल जाऊँगा मेहरानगढ़ के लिए। मेहरानगढ़ से जाऊँगा उम्मीद भवन, जहाँ प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी। सो मिलते हैं अब। सो हेयर आई एम रेडी टू गो। अब मिलते हैं ऊबर में, देखते हैं ऑटो करवाएंगे या गाड़ी, जो सस्ती पड़ेगी हम वो करवाएंगे। अब देखते हैं ऑटो में मिलेंगे या गाड़ी में, मिलते हैं ऑन द वे। सो मैं होटल से निकल गया हूँ, अब जाएंगे सीधे मेहरानगढ़। सो मिलते हैं अब मेहरानगढ़ में। सो मैं आ चुका हूँ मेहरानगढ़। भाई बहुत लोग आए हैं, आज संडे है ना, काफ़ी रश है यहाँ पे। और ये पूरा जोधपुर, ये यहाँ पे नीचे है ब्लू सिटी, और वो सामने उम्मीद भवन भी जाएंगे थोड़ी देर तक, पर पहले मेहरानगढ़ घूम लेते हैं। काफ़ी बढ़िया, ये देखने में तो बहुत अट्रैक्टिव है। चलो मिलते हैं अब टिकट लेने के बाद, क्योंकि बहुत लोग हैं यहाँ पे। सो मैं किला कवर कर लिया, पूरा मेहरानगढ़ कवर कर लिया। मतलब आप यहाँ पे आओगे तो आप सिर्फ 40% कवर कर सकते हो, 60% अभी भी अलाउ नहीं है जाना। बट वो मैंने पूछा था, वो कहते परमिशन लेके आप जा सकते हो। एंड मे बी नेक्स्ट टाइम मैं विद कैमरा सेटअप आऊँ पूरा प्रॉपर, और तब हम एक्सप्लोर करें। सो लेट्स ब्रिंग दिस सिनेमैटिक्स एंड हिस्ट्री, बूम। Mehranghar, the fort of Jodhpur, crowns a rocky hill that rises 400 feet above the surrounding plain and appears both to command and to meld with the landscape. One of the largest forts in Rajasthan, it contains some of the finest palaces and preserves in its museum many priceless relics of Indian courtly life. For over 5 centuries, Mehranghar has been the headquarters of the senior branch of Rajput clan known as the Rathors. According to their bards, the ruling dynasty of this clan had at an earlier period controlled Kannauj in what is known as Uttar Pradesh. Like other prominent medieval Rajput rulers, including the famous Prithviraj Chauhan, they were defeated by cheating from Afghanistan at the end of the 12th century. This catastrophe led to the disruption and migration of the early Rajput clans that they led. The Rathors came to Pali, in Marwar, in what is now central Rajasthan. It is claimed that they were to settle there to protect Brahmin villages against cattle-rustling local tribes. The story may seem somewhat fanciful, but the protection of the priestly caste in one of the traditional roles assigned to the Rajputs. Their task in Pali was the basis of their expanding power in the region. Chunda, R. 1384 to 1428, the 12th Rathor to rule in Marwar, established his capital at Mandore, which he had acquired as a part of a dowry. 2 generations later, Raujadha, R. 1438 to 89, began to build a fort at a new site 6 miles to the south, on an isolated rock with a higher elevation and better natural defenses. Jodhpur, the town that sprang up at its base, was named after him. The fort was named Mehranghar, meaning Fort of the Sun, a reference to the clan's mythical descent from the sun god Surya. Over 500 yards long,
Its wall rises in places to a height of 120 feet and is 70 feet thick. In those unstable times, a fort like Mehranghar was an object post, noun of great power and prestige. In today's terms, it would be rather like owning an aircraft carrier. Its uses post, noun, perhaps, were somewhat more varied. It was not just a military base, but also a palace for the rulers and their wives, a center of patronage for the arts, music, literature, and with its many temples and shrines it was also a place of worship. These diverse uses are reflected in many buildings within. Current head of the Rathore clan and custodian of the fort, Maharaja Gaj Singh II, has preserved the buildings and developed the museum as a record of the lives of his predecessors. His ancestors ruled the state of Marwar and over many generations built this architectural treasure, and it falls to him to ensure that their legacy is maintained and understood. मैं मेहरानगढ़ से आ गया हूँ कवर करके। अब मैं जा रहा हूँ जसवंत थाड़ा, जो कि यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। सो विदिन 5 मिनट में जसवंत थाड़ा पहुँच जाऊँगा। अब मिलते हैं जसवंत थाड़ा। सो मैं पहुँच गया हूँ जसवंत थाड़ा और वीडियो बना रहा हूँ इस ब्यूटीफुल लेक के पास खड़े होके। एंड सो लेट्स ब्रिंग द सिनेमैटिक्स एंड हिस्ट्री। बूम। This white marbled architecture is a memorial site of a Rajput clan. This cenotaph was built in the 19th century by Maharaja Sardar Singh in the memory of his father, Maharaja Jaswanth Singhi, the 33rd Rathore ruler of Jodhpur. One should visit this memorial, which has a temple-like architecture, on their tour to Jodhpur. Jaswanth thada is a perfect example of architectural brilliance. The architecture is made of white marbles which are so fine that the outer surface of the whole building emits a warm glow during sunlight. Currently it exhibits a variety of paintings and portraits of Jodhpur rulers. जसवंत थाड़ा से मैं निकल आया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ उम्मेद भवन में भी। मैं उसका ब्लॉग कल की सीरीज़ में अपलोड करूँ, आज ना अपलोड करूँ। आज तो मैं ऐसे घूम फिर के आ जाऊँगा। ब्लॉग मैं कल बनाऊँगा उसका, क्योंकि भाई सुबह से घूम रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। अब थोड़ी देर खुद अकेला घूमूँगा, मज़े करूँगा, फिर वीडियो बनाएंगे कल सुबह उम्मेद भवन की। तो अब मिलेंगे हम सीधा होटल में। अब मिलते हैं होटल में। बैक टू होटल। शूज़ खोले आते ही एसी फैन ऑन। अब बैठते हैं।
उम्मीद भवन में जाके आया हूँ, पर ना उम्मीद भवन में लाइक उस उम्मीद भवन को ना पूरा एक दिन चाहिए वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए। तो मैं भी ऐसे ही थोड़ा बहुत ही घूम गया हूँ, प्रॉपर नहीं घूमा। सो कल सुबह जाएंगे उम्मीद भवन। अभी करनी है रेस्ट, बिकॉज पूरे गर्मी बहुत थी, बाहर आते ही एसी ऑन करा है, फ़ैन ऑन करा है। अब चेंज करना और रेस्ट करनी है और रील्स अपलोड करनी है। बाकी यार जोधपुर है बहुत बढ़िया, गर्मी है पर रॉयलिटी देखनी है तो जोधपुर आओ। अल्टीमेट है यार जोधपुर, अल्टीमेट। चलो अब थोड़ी देर तक बात करते हैं, पहले चेंज कर लूँ और रेस्ट कर लूँ। सो मैंने डिनर वगैरह कर लिया एंड चेंज भी कर लिया, और अब मैं जाऊँगा सो, बिकॉज सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है। एंड अब मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कमेंट ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, एंड शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ अगर आपको अच्छी लगी हो। अब मिलते हैं नई वीडियो में कल। बाय बाय, गुड नाइट।